किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय यौवन काल होता है, जिसमें वह आने वाले लंबे जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का निर्माण और विकास करता है। इसी नींव पर अपने जीवन का मजबूत भवन खड़ा करता है और उसका भोग करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला और ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है। यही उसका आत्मबल और इच्छा शक्ति भी होती है। इसीलिए कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा। राष्ट्र निर्माण के ताने बाने में यौवन के ही धागे होते हैं। अतः जो राष्ट्र अपनी इस ऊर्जा का संरक्षण और संवर्धन करता है, वह विकास के उच्च शिखर पर पहुंचता है। राष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, राजनीति रूपी चक्के को यही युवा शक्ति, ऊर्जा व गति प्रदान करती है। यह राष्ट्र की रगों में बहने वाला गर्म खून है, जो उसे चैतन्य और प्रगतिशील बनाता है। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों के विकास में इसी ऊष्मा का तप सक्रिय रहता है। इतिहास साक्षी रहा है कि जब किसी राष्ट्र की धुरी लड़खड़ाई है, युवा शक्ति ने आगे आकर अपने पुरुषार्थ से उसे सुदृढ़ बनाया है। आज अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे नशा, फैशन परस्ती, पाश्चात्य जीवन शैली, आस्था संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देश की युवा शक्ति पर आरूढ़ हैं। आज युवा शक्ति को आत्मबोध एवं अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना समय की मांग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 35 वर्ष तक की उम्र की 65% आबादी है। यह युवा शक्ति जिधर चल पड़ेगी, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। अतः देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने युवा की अद्भुत परिभाषा दी है। युवा वो है असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता एवं स्वामी है, जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग, उत्साह, जोश से जीता व सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। असमंजस व अवसाद की स्थिति गुजर रही युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम एक चिंतक ही कर सकता है। नमस्कार। वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यहीं से दिया की नींव रखी गई। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. जिस तरह एक दिया अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दिया भी इस देश के युवा मन से अंधेरे को दूर करने का स्वप्न लेकर चला है। ये प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, विनम्र, संवेदनशील दिव्य युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिससे राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियां चलाई जा सकें, दिव्य भारत का पुनर्निर्माण हो। इसका लक्ष्य युवाओं की क्षमताओं का विकास कर दिव्य भारत का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज का उत्थान हो। दिया युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाकर उनकी वैचारिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति, दुनिया में सद्भाव के साथ सत्य की वापसी इसका परम उद्देश्य है। इस तथ्य की महत्वता समझते हुए वो डॉक्टर कलाम के भारतवर्ष को
वर्ष 2020 तक एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के स्वप्न की ओर युवा शक्ति को अग्रसर करने के लिए दिया इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आंदोलन है जो मजबूत सिद्धांतों और यथार्थवादी लक्ष्यों पर आधारित है। जो लोग दिल और दिमाग से युवा हैं एवं जो एक नए भारत की परिकल्पना के हमारे स्वप्न से सहमत हैं, उम्र, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर हमसे जुड़े। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो इस मंत्र के साथ इस आंदोलन से जुड़कर आपके जीवन में खुशी एवं एक नए उत्साह का संचार होगा। साथ ही अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। नमस्ते, मैं सुचिता शेट्टी आज के ज्ञान सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच रिस्पेक्टेड डॉक्टर H.C. जैन आज उपस्थित है। और जब हम ज्ञान सभा की बात करते हैं, जो कारवा शुरू हुआ था पैंडेमिक के दौरान पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, it has been indeed a great privilege for us to have such an illustrious personality to guide us today. To guide us today on this Gyan Sabha, the 100th episode of Gyan Sabha, which has enlightened so many individuals today. So I humbly request you all, the august audience today, to welcome Dr. H.C. Jain here today. Namaste, Jain sir, to have blessed us on this Gyan Sabha for the 100th episode. Param Puchya Gurudev, Param Vandaniya Mata ji की सूक्ष्म उपस्थिति में आज की ज्ञान सभा की शुरुआत गायत्री मंत्र से हम करना चाहेंगे। सबसे नम्र निवेदन, आप जहाँ कहीं भी है, कमर सीधी, आंखें बंद और गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की ज्ञान सभा में हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं जो विषय हम सबके बहुत करीब है, बट इस विषय पर समय देने के लिए हम हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा स्केड्यूल होता है, हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स में इतने इंटैंगल्ड होते हैं कि कभी हम हु एम आई, हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इससे कहीं भटक जाते हैं। और जब इस विषय हमें दिया मुंबई को बहुत खुशी होती है कि ज्ञान सभा के 100th एपिसोड पर हम एक ऐसे विषय को आपके बीच में रखना चाह रहे हैं जिसका शीर्षक है हु एम आई। एंड व्हेन इट कम्स टू हु एम आई, it takes me back to the book which was written by the founder of All World Gayatri Parivar, revered Pandit Shri Ram Sharma Acharya ji, जिन्होंने किताब लिखी Who Am I? And let me take this opportunity to tell the august audience who have joined from various social media platforms that this book is the masterpiece. I think words are less to express about this book, Who Am I? And in fact, Times of India has also written a lot. Seekers, spiritual speakers, readers have mentioned about this masterpiece called Who Am I? Today, to speak about Who Am I, we are blessed that we have amongst us respected, revered Dr. H.C. Jain, sir, who's got a lot of fan following, especially on this topic and a lot of other topics, spiritual topics. To speak about Sir has done his Ph.D. in history. He joined the Indian Revenue Service in the year 1982. He served in the income tax department at various cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. Right from the level of an assistant commissioner to principal commissioner and chief commissioner of income tax. Also to make a special mention that he was the vice chairman of income tax settlement. But all of this, the various roles that Sir has handled, something that has kept him going
something that has given him a lot of mental strength is his interest in spirituality, the strong values that this personality stands for. I would also like to make a special mention that Sir was entrusted with challenging charges like Commissioner of Income Tax, Director of Criminal Investigation, and he's played a pivotal role in a lot of scams, security scams, and a lot of unearthing all these scams, going to the root cause of all of this and bringing the truth in front of everybody. After retiring from such an illustrious career in Jan 2019, something that he's been doing, something that he's passionate about is he comes out of the way to guide taxpayers and professionals on complex direct tax issues. Apart from all of this, we see a human being full of humility, sensitive to taxpayer issues, and especially when we are coming close to this financial year, I think he's somebody whom we can look out for mentorship and guidance. Before joining the Indian Revenue Service in the year 1982, he started his career as an advocate in Delhi High Court. So despite all his professional achievements, competencies, he's a true friend, guide, and mentor to a lot of tax professionals and taxpayers. Currently, Sir is a member in the Audit Advisory Committee of C&AG for Western Region. Ardent seeker, blessed with the law from, is a privileged divine soul who's got a lot of blessings from the saints and sages from across the globe. Has been associated with Brahmashri Subhash Patri for the last 22 years and is a founder of PSSM in North India. He's been traveling, he's invited as an expert to speak on spiritual subjects and teach meditation to seekers. As a spiritual counselor, guide to many seekers across the globe, he is a regular speaker on the topic on which Diya Mumbai has invited him to speak on, and that is, who am I? Sir, with due respect and pranams on behalf of all the volunteers of Diya Mumbai, which is the youth movement of All Well Gayatri Parivar, and the special occasion where Shanti Kunj, the headquarters, celebrates 100 years of selfless service to humanity and bringing divinity in every individual and contributing to the larger goal. We are blessed to have you, sir. I humbly request you to please come over and speak on the topic, who am I? Thank you, Suchita ji. I am audible? Yes, sir, you are. Okay. Thank you so much for such a detailed introduction, and I extend my deep gratitude to Diya, to Gayatri Parivar. In fact, I was posted in Dehradun and I was in continuous touch with the Pandya ji and other organizers and promoters of Gayatri Parivar there. And I was a constant visitor there. So it is very heartening to be associated with this event and talking on who am I from this platform. So I'll be speaking in a mixed language, as I have been told. Is that correct? So, friends, the topic today is who am I? Now, it looks very strange to say or to know who am I. Everybody would wonder, is there something which we do not know about myself? And that is the real truth also. मैं कौन हूं? जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि मुझे अपने विषय में मालूम नहीं है, और यही सत्य है, और ऐसा ही अवेकेंड मास्टर्स ने कहा है, ऐसा ही सेंट्स और सेजेस ने कहा है। अब हम अपना चर्चा करते हैं कि एक कॉमन आदमी, एक कॉमन पर्सपेक्टिव से मैं अपने लिए क्या सोचता हूं। मैं सोचता हूं आई एम ए पर्सनैलिटी, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, एक एज है मेरी, मेल और फीमेल में से एक हूं, मेरा एक व्यवसाय या आजीविका का साधन है,
I am a native of some particular place. किसी जगह का, किसी राष्ट्र का मैं निवासी हूं. मेरा कुछ धन संपत्ति है, मेरा परिवार है, मेरी विरासत है, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है. Like so much introduction which was given about me by Suchita ji, that was in a way who am I? That was my introduction. But that is not my introduction. That is not what I am. That we have to understand. From a spiritual perspective, I am not having that introduction. That introduction belongs to my body. कितना मेरा एज है, मेरे कौन माता पिता हैं, कब मेरा जन्म हुआ, कहाँ मैंने शिक्षा ली, कौन मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये सारे का सारा जो भी ये विस्तृत विवरण है, ये मेरे शरीर का, मेरे मन का मतलब मेरी आस्थाओं का, मेरे बिलीफ्स का, मेरे विचारों का, मेरे इंटेलेक्ट का, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स का, और मेरे जो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो मैंने राइट फ्रॉम दी बर्थ धीमे धीमे जब मैं ग्रो किया, जो मेरे अनुभव हुए और जो मेरे अचीवमेंट्स हुए, उन सब का एक वृत्तांत है. सो दिस इज नॉट रियल मी. सेजेस ने कहा कि ये जो सारे का सारा इंट्रोडक्शन है, जो प्रत्येक व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन यही मानता है कि मैं ये हूं, वो गलत है. वो अपने को मात्र एक व्यक्तित्व मानता है, अपने को एक सेपरेट शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों की एक एंटिटी मानता है, जिसका जन्म होता है और कुछ अंतराल के बाद 50 साल, 80 साल, 75 साल, कुछ के बाद उसका समापन हो जाता है. और इसी से दूसरी समस्या की शुरुआत होती है कि जब मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि और एक व्यक्तित्व मानता हूं, तो मेरे अंदर मृत्यु का डर रहता है और मैं तरह तरह के हैप्पीनेस के लिए, आनंद के लिए आई कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ लिमिटेड personality which was born on some day, which will die on another day, and I am always in need of more things, more relationships, more wealth, more possession, to accumulate them so that I may expand myself under an illusion that will give me happiness. So sages have said that two things, every one of us, not only human beings, even the other beings on this earth, desire two things. One is happiness. Everybody wants to have a joyful life. There should be continuous happiness in everybody's life. This is the desire of every human being. Another thing is, everybody wants immortality. Everybody wants कि his existence should be continuous, eternal. मृत्यु को हर व्यक्ति ट्रांसेंड करना चाहता है, मृत्यु ना हो, हर एक के अंदर जीने का भाव रहता है. और सेजेस ने कहा, if you know really who you are, then it will be revealed to you that you are happiness, you are Sat Chit Anand, you are bliss itself. And second, you are eternal, you are immortal, you were never born, you will never die. These are the two fundamental truths about your real nature, which has been covered, which has been veiled by the ignorance, that we consider ourselves a body having been born at one particular time and going to die on some day, and then
considering myself a limited entity. So realized sages revealed this, that this is the ignorance. And the moment you remove this ignorance, you will find you are not an individual entity. You are the existence itself. You were never born and you are not going to die. You are Sat Chit Anand. Sat means existence. Chit means awareness or consciousness. And Anand means bliss. And these three are not different. They are one and the same thing. So we must try to know how our essential nature is Sat Chit Anand, and how we can realize, how can we experience that nature, that blissful nature, immortal nature, eternal nature of myself, so that my ignorance, my agyan about the false nature or false identification with body, mind, intellect is removed, is dispelled. So this is the entire spiritual teachings, which has been the essence of Vedantic teachings. Even in the Greek teachings, Socrates said, know thyself. It was his famous dictum. You have to know yourself, that you are immortal soul. So is the teachings of Mahavira. You are eternal soul, and you are taking birth, dying, taking birth, dying, but you are eternal. So far as the religions of the East are concerned, and even the Greek thinkers and philosophers, they have declared that every human being is eternal and he is bliss in himself. And the entire task of any spiritual journey is to find your true nature, to realize that you are blissful, you are happiness, you don't need anything. Out of our अज्ञान, out of our ignorance, हम अपने को पहले सीमाओं में बांध देते हैं. मैं एक व्यक्ति हूं, इस जगह रहता हूं, मेरा ये थोड़ा साधन सामग्री है, और फिर मैं अपने को एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं. पहले अपनी सीमाएं बनाऊंगा और फिर उन सीमाओं को एक्सपेंड करूंगा, और इसी में मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है. और इसमें मैं अपने को अभाव से पूर्ण पाता हूं. मेरे अंदर स्केर्सिटी है, मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर एंजाइटी है, मेरे अंदर स्ट्रेस है. और इन सब चीजों को मेकअप करने के लिए आई वॉन्ट टू एक्सपेंड. मुझे अच्छे रिलेशन चाहिए, और साधन सामग्री चाहिए, और धन संपत्ति चाहिए. ये मेरी एक मूर्खता होती है कि इन सब चीजों के पैदा होने से, इन सब चीजों के एक्यूमुलेशन से मेरे जो भी एंजाइटीज हैं, जो भी फियर हैं, वो ओवरकम हो जाएंगे. और पूरे समय इस अज्ञान के रहते हुए मैं उस आनंद से, मैं उस इमोर्टैलिटी से, अपने शाश्वत स्वरूप से बिल्कुल दूर रहता हूं. मुझे उसका बोध नहीं होता. तो इसकी तुलना की कि जैसे सागर है, ओशन है, और ओशंस की वेव्स हैं. ओशन की वेव्स होती हैं. वेव्स का क्या स्वरूप है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेव्स? वेव्स का एसेंस होता है जल, जो कि समुद्र का जल है. सो वेव्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ओशन. लेकिन वेव्स अपीयर होती हैं, थोड़े टाइम ऊपर रहती हैं, फिर ओशन में चली जाती हैं. तो वो ट्रांजिटरी होती हैं. बट इफ द वेव स्टार्ट्स कंसीडरिंग itself separate from the ocean, then it is very limited. It has a limited lifespan. It is very short. It is very small. The same thing out of delusion, I, having taken a body form and name, am like a wave.
everybody is like a wave, and we have disjointed, we got disconnected from our source, that is the ocean. So in the source stage, we all are one. We are the existence as such. We are the awareness as such. We are the pure consciousness as such. And we have to realize, we have to find, we have to find our true nature. That is the job, that is the real purpose of spiritual journey. And that is very nicely explained in the teachings of Raman Maharshi, which we are continuously doing our small platform on Who Am I and self-inquiry. And as Madam Suchita has said, that even a great book has been written by Acharya Sri Ramji also on that subject. And there have been many other books, because that is the essence of all teachings of Vedanta. That you are immortal, you are Satchit Anand. So like waves are different from the ocean, and waves are not different from the oceans, and waves are the ocean, similarly I am not different from the existence. At a source level, I am one with everyone. I am one with the every existence. But when I emerge as a names and form, I consider myself a separate entity. And that is only out of ignorance. How do we consider? We will come little later on that aspect. Another example which is given in the Vedanta is like there are ornaments. All ornaments are made of the gold. But if some lady comes in the shop, she will see only the ornamental form of that gold. She will not see the essence of that gold. She will say, I need bangles, or I need chain, or I need ring, or I need necklace. So for a lady who wants to wear, she is entangled in the names and forms. But if sometimes you go to a goldsmith to sell your ornaments, then for him it is not the ornament, it is the gold only. There is a story, एक स्टोरी है कि एक सेठ, उसको थोड़ा धन का अभाव हो गया, तो उसके पास अपनी विरासत का एक गणेश और एक चूहा सोने के उसके पास थे. उसको पैसे का जरूरत था, तो वो गोल्ड स्मिथ के पास, महाजन के पास उनको लेके गया, और गोल्ड स्मिथ ने से कहा मुझको ये बेचना है. गोल्ड स्मिथ ने गणेश का चूहे का वजन किया और उसको बताया कि भाई गणेश का जो कीमत है वो आपको 20,000 रुपया, और जो चूहे का कीमत है वो 80,000 रुपया. नाउ दिस मैन, ये सेठ है, ये उससे बहुत नाराज हो गया, बहुत कुपित हो गया कि आप कितने मूढ़ हैं. गणेश की कीमत आप 20,000 कहते हैं और चूहे की कीमत आप 80,000 कहते हैं. तो गोल्ड स्मिथ ने कहा, आई डोंट सी एनी गणेश एंड चूहा इन दिस, आई सी ओनली गोल्ड इन दिस, एंड सिंस द वेट ऑफ गोल्ड इज मोर इन द माउस, सो आई एम valuing it more. It is less in Ganesh, so I am valuing it. So for you, it is Ganesh and Chua. It is a name and form. For me, its essence is gold. So I go by the gold. तो सेम वे जो ज्ञान दृष्टि है, जो एक सेज की दृष्टि होती है, वो अभेद दृष्टि होती है, और जो कॉमन व्यक्ति की दृष्टि होती है हमारी, वो भेद दृष्टि होती है. हम इस जगत को नेम्स एंड फॉर्म्स में देखते हैं, बट इस जगत का जो अधिष्ठान है, whatever is the substratum and whatever is the illumination, उसको हम नहीं देख पाते. सबस्ट्रेटम और इल्यूमिनेटिंग फोर्स वो एक ही है, एक सत्ता है. दैट इज वन रियलिटी, जिसको कहा गया है सेल्फ और आत्मा और साक्षी और कुटस्थ
और चैतन्य, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, दैट इज ओनली एक तत्व है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझें, जैसे कि टीवी का स्क्रीन होता है, टीवी के स्क्रीन पे पिक्चर चलती है एंड वी आइडेंटिफाई, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द मूवी being shown on the screen and we become unaware of the screen, and movies keep on changing. Similarly, the events in our life, our thoughts, the events, the activities, the achievements, the experiences, they keep on changing like a movie. But there is a witness, there is a screen within us that is permanent, that is final, that remains eternal. एंड ज्ञान दृष्टि का मतलब है कि आप उस स्क्रीन को ही, उस आप स्क्रीन का अवेयरनेस में जाएं, उस अवेयरनेस के प्रति अवेयर हों जो कि आपका रियल स्वरूप है, विच यू आर, उसको आपको जानना है। क्योंकि एक बार जब आपने उसको जान लिया, जब आपने अपने स्वरूप को जान लिया, तो फिर आपको बाहर का कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बाहर का जानना जो है वो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड है। दैट इज जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन, लाइक द मूवी being played on the screen, that is transitory, but the screen is permanent, and screen has two character. One is, it is substratum, it is foundation, be it of the cinema screen or be it of the TV screen. And another is, it also have illumination. Out of that illumination, only the screen is showing that movie. The same way our essence, Sat Chit can be compared with that screen only. It is the foundation, it is the अधिष्ठान, उस अधिष्ठान पे ही सारी चीजें, ये वर्ड इमर्ज करता है। नेम्स एंड फॉर्म्स का संसार जगत उसी से इमर्ज करता है, उसी से उसका प्रादुर्भाव होता है और उसी में मर्ज कर जाता है। और वो चित्त से, अवेयरनेस से ही, उसमें सत और चित्त दोनों एक ही चीज के नाम है कि अवेयरनेस इज ऑल्सो देयर। सो वंस वी आर फोकस्ड, वंस वी डाइव विद इन एंड वी कैन बी इनटू दैट अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स without any contents. Right now, we are engaged, we are entangled, we are invested into contents, different activities from the morning till the evening, from the time we were born till we will leave this world. So our life is filled with those contents. एक पेपर है, सादा पेपर, उस पे तमाम चित्रकारी बनी हुई है। उस पेपर जो कि एक सादा पेपर था, उस अधिष्ठान को हम नहीं जान पा रहे। तो sages are saying कि your nature is like that clean paper, like that substratum, like the river bed on which the water is flowing, and you are full of sorrow and full of excitement if something as per your wish or against your wish happens, and life becomes full of miseries. क्योंकि जो ये घटनाक्रम है, जो ट्रांजिटरी इवेंट्स हैं, इसमें ये सोचना कि ये कभी भी आपके हिसाब से हमेशा चलेंगी, वो संभव ही नहीं है। तो आप अपने अंदर बैठे हुए साक्षी को जानो, अपने अंदर बैठे हुए दृष्टा को जानो जो कि परमानेंट है। व्हाट इज दैट परमानेंट? वो परमानेंट अवेयरनेस क्या है? इसको इस तरह से समझिए कि आप बचपन में बच्चे थे, फिर बड़े हुए, क्लास में गए, शिक्षा दीक्षा ली, फिर एडल्ट हुए, फिर और बड़े हुए, बुजुर्ग हुए। अभी भी आपके अंदर एक मैं होता है, एक मैं है जो मैं कंटिन्यूअस, यू हैव ए फीलिंग ऑफ कंटिन्यूअस, कि देयर इज ए कंटिन्यूटी इन दैट मैं। और उसके ऊपर ये जो तमाम चेंजेस हुए हमारी बॉडी में,
ये सब आवरण की तरह है। उसके एसेंस में, उसके सेंटर में एक मैं है कि जब आप उस मैं पर आपका ध्यान जाता है तो दैट मैं इज लाइक अवेयरनेस विच हैज बीन कॉन्स्टेंटली इनवेरिएबल डिस्पाइट ऑल दीज वेरिएबल्स, डिस्पाइट ऑल दीज वेरिएशंस इन योर बॉडी। आपका कभी थॉट एक नहीं रहा, थॉट आपके घड़ी घड़ी बदलते हैं, आपकी बॉडी बदलती है, आपकी बुद्धि और विवेक बदलता है, बट आप वही रहते हैं। सो वो जो एटर्नल एलिमेंट है, दैट इज चेतन, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज अवेयरनेस। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम लोग एवरी 24 आवर्स वी अंडरगो 3 स्टेजेस। One is the waking state, like we are waking, I am talking, you are listening. This is a waking state. एक है स्वप्न स्टेज, जब हम सोते हैं तो हम स्वप्न में चले जाते हैं। और तीसरी है सुसुप्ति, डीप स्लीप स्टेट। तो कहते हैं जब हम जागते हैं तो हमें जगत प्रपंच दिखाई देता है, उसको नाम दिया जगत प्रपंच। ये संसार हमें नेम्स एंड फॉर्म्स का, ऑब्जेक्ट्स का, घटनाओं का, रिलेशंस का, आई, यू एंड ही का, ये सारे का सारा जगत प्रपंच दिखाई देता है। क्योंकि जब मैं जागता हूं तो मेरे सेंसरी परसेप्शन वो एक्टिवेट हो जाता है, माई माइंड टर्न्स आउटवर्ड, और अपने सेंसरी परसेप्शन से, अपने ऑर्गन्स, अपने इंद्रियों से मैं इस जगत की रचना भी करता हूं और उस जगत के साथ एक हो जाता हूं। दैट इज द वेकिंग स्टेट। व्हाट इज देयर इन द ड्रीम स्टेट? ड्रीम स्टेट में देयर इज ए डिफरेंट माइंड, देयर इज ए ड्रीम माइंड, उसको कहा स्वप्न प्रपंच। और उसमें जब तक आप उस स्वप्न में रहते हैं तब तक भी आप उसको वास्तविक मानते हैं। जब स्वप्न से उठते हैं तब आपको लगता है अरे मैं तो स्वप्न में था। और एक तीसरा है डीप स्लीप। कहते हैं जो ये डीप स्लीप है, सुषुप्ति, इसमें इट इज लाइक ए ब्लैंक। आपको कुछ भी भान नहीं होता जब आप सो रहे होते हैं, बिकॉज योर माइंड इज टोटली शट डाउन। You are not aware of even your body when you are in a deep sleep. When you come out of the deep sleep, जब आप डीप स्लीप से बाहर आते हैं तब आपको लगता है ओहो, I slept so sound and you have a feeling of bliss. कहते हैं जो वो डीप स्लीप है उसी में you realize you have the taste of that bliss which is your nature, but unconsciously. यदि वो जो डीप स्लीप का ब्लिस है, जो आपकी नेचर है, जो आपका स्वरूप है, वो कॉन्शियसली हो जाए तो उसी का नाम अवेकनिंग है। उसी को कहा है जागृत सुसुप्ति, कि जो सुसुप्ति में आनंद है वो इस वेकिंग स्टेट में आ जाए। क्योंकि जो वेकिंग स्टेट में जो भी हमको दिख रहा है ये वास्तविकता नहीं है। ये सुनने में बड़ा ताज्जुब लगता है कि कैसे वास्तविकता नहीं है। मेरे हाथ हैं, मेरी इंद्रियां हैं, मैं देख रहा हूं। सेजेस ने कहा इस बात को, यही हु एम आई का जो निचोड़ है जिसको अच्छी तरह हमें जानना है। जैसे ही मैं उठता हूं मेरे अंदर एक आई थॉट का निर्माण होता है, मैं विचार का। When I wake up out of the deep sleep, there is a I thought और ego. मेरे अंदर ईगो, सेंस ऑफ सेपरेशन, वो पैदा होता है और मैं अपने को सेपरेट एंटिटी मान लेता हूं। एंड देन माइंड गोज आउटवर्ड। आई थॉट इज द स्टार्टिंग ऑफ माइंड, और उसके बाद ये तमाम तरह तरह के विचारों का निर्माण करता है। मैं सुबह को उठूंगा, अपने कमरे को देखूंगा, दूध वाले के लिए, स्कूल वाले के लिए, और फिर सारे के सारे जगत प्रपंच का निर्माण हो जाएगा। हाउ इट कम्स? दैट माइंड बिकम्स एक्सट्रोवर्ट, माइंड थ्रू सेंसेस। व्हाट इज द माइंड?
Raman Maharshi says that I thought, ego and mind, they are the same thing. जैसे ही आप जागते हैं, ये आई थॉट एक मूल विचार, आई का निर्माण होता है, उदय होता है, उत्पत्ति होती है, और उस आई विचार के आधार पे अन्य विचारों का, अन्य नेम्स एंड फॉर्म्स का निर्माण करते करते यू बिकम एक्सट्रोवर्ट एंड देन यू कंसिडर all the reality, external reality as the truth. And since you consider yourself a body, then all the associated relationship, the objects and other things also are attached to you. इस तरीके से आप आसक्ति में आ जाते हैं, और जो ये जगत का निर्माण होता है, जबकि ये निर्माण एक आई विचार के आधार पे हुआ है, उस आई विचार की हम लोग आगे चल करके विश्लेषण और अन्वेषण करेंगे रमन महर्षि की टेक्निक से। वो कहते हैं ये आई विचार का जो निर्माण हुआ आपके अंदर, जब आप जागे, उससे आपके अंदर सेंस ऑफ सेपरेशन आ गया, एक अहंकार की उत्पत्ति हुई, आपने अपने को अलग मान लिया, और फिर उस अहंकार से आपके साथ शरीर का तादात्म्य हुआ, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियों के द्वारा आपने बाह्य जगत से एक संपर्क किया, और आपने बाह्य जगत को, जो कि नहीं है, जो कि नहीं था, उसको, उस जगत प्रपंच को आपने मान लिया। तो ये जो है, एंड व्हेन यू गो टू स्लीप, लास्ट थॉट विच विल मर्ज और विच विल सेट इज आई थॉट। तो सेजेज हैव सेड कि जब आप सुबह को उठते हैं तो आई थॉट का निर्माण होता है, और जब आप सोते हैं तो आई थॉट सेट हो जाता है। डीप स्लीप में दिस आई थॉट इज नॉट देयर, बट स्टिल देयर इज समबडी, सम रिकॉर्डर इज देयर, some master recorder is there. As soon as you get up out of this deep sleep, somebody tells you, oh, I had a very sound sleep. कहते हैं this is the fourth state, और this is your real स्वरूप, this is called तुर्यम। इसको कहा है तुर्यम, ये फोर्थ स्टेट है। दिस इज सेल्फ, दिस इज आत्मन, दिस इज कॉन्शियसनेस, और ये हर एक स्टेज में रहती है, लेकिन इसके ऊपर आवरण हो जाता है वेकिंग स्टेट में, बिकॉज आवर माइंड इज एक्सटर्नलाइज्ड, माइंड इज एक्सट्रोवर्ट, तो हम लोग बाहर की दुनिया को सच्चाई मान लेते हैं, और उस अवेयरनेस से, विच इज द एब्सोल्यूट अवेयरनेस है, जबकि वो रहती है बिना वो तो ऐसी चीज है जो कभी आपसे जुदा होगी नहीं, दैट इज द नियरेस्ट टू यू, दैट कॉन्शियसनेस, but you are not aware of that awareness, you become only aware of the names and forms। उसको कहा ये एक तरीके से Can I continue now? Sir, yes, absolutely. Okay. So, जब मैं, what is the, you know, the essence, what is the message which is coming out of this? The sages are saying that there is one element which is unchanging, which is eternal, the master recorder, that is the awareness within you. In that awareness, this waking state is there, in that state dream state is there, and in that even the sleep is there, that remains common throughout, and in your essence, in your swarup, you are that awareness, that is called Sat Chit Anand. How do we go there?
how do we realize our true nature, and how do we come out of this ignorance? That is the most challenging question, and there must be some way out. Different sages, different saints, all throughout their spiritual journey have endeavored to find the way out and to tell the truth of your true nature. Buddha said, go to meditation, and through meditation, you make your mind pure. Mind will become pure, subtle, and then the consciousness will get reflected. Like the sun gets reflected in the moon. Moon doesn't have its light, but moon gets all the light from the sun. Same way, mind is right now gross. It is filled with so many desires, so many vasanas and latent tendencies. उन वासनाओं के कारण हमारा मन ग्रॉस है, स्थूल है. उस मन को हम धीमे धीमे अपने सत्कर्मों से, अपने डूज एंड डोंट से, अपने मेडिटेशन से सटल करेंगे कि वो इतना प्योर हो जाए कि वो जो आत्मा का प्रकाश है, द लाइट ऑफ आत्मा गेट्स रिफ्लेक्टेड एज क्लियरली एज आत्मन इटसेल्फ. एग्जाम्पल दिया है, रात्रि का टाइम है, फुल मून है और नीचे सरोवर है, और सरोवर बिल्कुल स्थिर जल है उसका, उसमें कोई तरंग नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं. मून नीचे पड़ता है उसमें तो लगता है कि ये तो बिल्कुल मून की तरह ही चमक रहा है. ऐसी जिस संत का, जिस इवोल्व व्यक्ति का मन पूरी तरह से साफ हो गया, निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया, तो उसमें आत्मा उसी तरीके से चमकती है, रेडिएट होती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड द आत्मा. दिस इज द बुद्धा वे. द अद्वैत वेदांत में रमन महर्षि, whose teachings we are just talking about, he gave a direct path. He said that there is a direct path to reach your source, to realize your true nature, because you are that right now. अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि. अभी आप जो है वहां पे इमीडिएटली आप वहां पे हैं. केवल अपने अज्ञान को हटा दीजिए कि यू आर ए बॉडी, यू आर ए माइंड एंड इंटेलेक्ट. देन इफ यू रिमूव दीज इल्यूजन्स, योर आइडेंटिफिकेशन, योर एसोसिएशन with body, mind, senses, automatically your association with the outside world gets dissociated, and then you are that pure awareness, consciousness. उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि माइंड जैसे ही जब आप सो के उठते हैं तो माइंड जो आपका आउटवर्ड जाता है, उस माइंड को, उस आई थॉट को बाहर ना जाने दें. As soon as it goes outward, you have to restrain it there. बहिर्मुक्ता का मतलब है जगत प्रपंच. जैसे ही आप अपने मन को बाहर की तरफ ले जाते हैं तो आप जगत का निर्माण करते हैं. You go and get entangled in the world of names, forms, relationship and multiplicity. आप भेद में चले जाते हैं, परिच्छिन्नता में चले जाते हैं. और यदि उस माइंड को, इफ यू कैन टर्न इनवर्ड, देन दिस माइंड विल मर्ज इनटू इट्स सोर्स. माइंड इज इक्वल टू आई थॉट. आई थॉट जो है वो जिस सोर्स से आया, जहां से मेरे अंदर से आई थॉट ने, आई विचार ने जन्म लिया, वो वहीं पे मर्ज हो जाएगा. और जब वो मर्ज हो जाएगा, ओनली दैट सोर्स, दैट रियलिटी, दैट कॉन्शियसनेस विल शाइन. ये कॉन्शियसनेस अभी भी सब जगह शाइन कर रही है, लेकिन अभी एक आई जिसको मैं बोलता हूँ, आई आई आई, मैं सुबह से शाम तक बोलता हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ आई एम स्पीकिंग. इसका मतलब आई एम आइडेंटिफाइंग दिस विद माई सेंसेस, माई बॉडी. मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ. मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया, उन सब में जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो एक्टिविटीज आई वाली,
That is my very, very peripheral, limited introduction, unreal introduction of my name and form. इस आई को भी जो सत्ता मिलती है वो एक रियल आई मेरे हृदय में विराजमान है. रमन महर्षि कहते हैं एटर्नल आई, दैट आई शाइन्स इन दी हार्ट. वो आई हमेशा शाइन करता रहता है. दैट इज ए इल्यूमिनेटिंग फोर्स. वो फोर्स इज द सोर्स. फ्रॉम दैट आई दिस आई इमेनेट्स. और इस आई को आपने जब बहिर्मुखी कर दिया तो आप जो है अपने को एक बॉडी मानते हुए सारे संसार में आप जो है एंटेंगल हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं. और जैसे ही ये आई का उदय होता है आप उस आई पे ही अपनी दृष्टि रखें. यू पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दैट आई थॉट, सो दैट आई थॉट इज नॉट अलाउड टू ग्रेस्प any names and forms. It is not allowed to go outward. And you start doing the practice of self-inquiry. You start exploring this I. What is this I? From where this is arising? So it stays within you. And when ये I बाहर नहीं जा पाता, आप इसको बाहर नहीं जाने देते, ये I धीमे धीमे, I का मतलब है अहंकार, धीमे धीमे वीकन होने लगता है. वीक होते होते ये गिर जाता है या इट गोज बैक टू द सोर्स. इट सिंक्स इनटू द सोर्स. सो दिस आई थॉट, माइंड, मन, ईगो, अहंकार, ये तीनों एक ही चीज है इन दी अद्वैत वेदांतिक टीचिंग्स और इन दी टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि. और इसमें सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में हम लोग हमेशा इस आई थॉट पे ये ध्यान देते हैं कि मेरे अंदर ये आई थॉट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है. और उस आई थॉट को ही पूरी तरीके से अटेंशन देते हुए निर्बाध रूप से वहीं पे अटेंशन रखते हैं आंखें मीच करके. कोई भी विचार आता है, यदि इफ एनी थॉट कम्स टू मी, मुझको क्या पूछना है? टू whom दिस थॉट इज कमिंग. ये विचार किसको आ रहा है? और उसका उत्तर देना होता है ये विचार मुझको आ रहा है. And then again put a question, who am I? So this is called who am I technique of self-inquiry, which has been gifted or which has been blessed by Raman Maharshi, a sage of Tiruvannamalai, and which has been practiced by so many seekers who got realization. There is a book by Paul Brenton, A Search in Secret India. A Paul Brenton was a seeker, ardent seeker from Western country. He was told that India is a land of sages, realized masters. He came here, he explored, but he could not find anyone. Then when he was to leave, then somebody told, no, there is a realized sage and he is Raman Maharshi. And you go to Tiruvannamalai. And he went there. And there he got that realization. He could realize his true nature. And he has written this book, A Search in Secret India. And when this book was published, people came to know about the Raman Maharshi all over the globe. People came from Israel, from the USA, from Argentina, from UK, from Australia, everywhere people used to come. The Raman Maharshi never left his ashram in Tiruvannamalai. And his only technique was, who am I? Any question was put, he will say, ask yourself, who is asking this question? And go back into the I. Because there are only two I. One I, which is a अज्ञान के कारण जिसको मैंने अहंकार को आई माना हुआ है, ये अहंकार युक्त आई है. और एक रियल आई है विच इज एटर्नल, विच शाइन्स इन दी हार्ट. जब हम हार्ट कहते हैं तो हार्ट जो है वो फिजिकल हार्ट नहीं है. वो हृदय जो है स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक हृदय है. उसको एक फिजिकल जगह बताई गई है अपने अंदर, बट बेसिकली दिस इज द कोर ऑफ योर बीइंग.
and that is the center of the entire existence. क्योंकि जब आप उस आई पे होते हैं तो you don't have any feeling of your body even. You get totally withdrawn like a tortoise. Your mind will be totally सब उसका शब्द उसका नाम दिया उन्होंने मनोनाश, मनोलय और मनोनाश. माइंड का एलिमिनेशन ही अपने स्वरूप का बोध ला सकता है. माइंड डिवाइड्स, माइंड प्रोजेक्ट्स. दिस वर्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, and when this mind is eliminated, mind is annihilated, then you are that. You have that divinity radiating through you. Then how we will be able to do the work? That is the question. If my mind does not remain, then the higher force, the cosmic intelligence will take you over. You will become instrument of cosmic or higher power, and through the intuitive wisdom आप निमित्त होंगे. You will be instrument in the hand of that higher power, and आपके द्वारा जो भी कर्म होगा वो कर्म इस सृष्टि के वेलफेयर के लिए, उसके लिए आपका होगा. आपका कुछ पर्सनैलिटी, आपका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाएगा. Another sage who is also in this line, and I would recommend everybody should listen to and to read his book, that is Nisargadatta Maharaj. Book I Am That is also a great book. You should read that book. These two books, if you read the Raman Maharshi's small booklet on Who Am I and Self-Inquiry, they are available in PDF. Anybody who is interested, we can send it to Suchita ji. They can circulate it. And then Nisargadatta Maharaj book also in PDF. That is in Hindi as well as English. So these two sages take you to the ultimate teaching. That is called the ultimate path, direct path. Usually in other systems of spirituality, it is said मुक्त होना, फ्री होना, लिबरेशन होना कोटि कोटि जन्मों का काम है. बट महर्षि रमन कहते हैं निसर्गदत्त महाराज, हियर एंड नाउ, अभी संभव है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथ. हाउ? एक एग्जाम्पल दी जाती है. जब बारिश होती है तो जितने भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों में या शेल्टर में आ जाते हैं. लेकिन एक ईगल होता है, उसका आउट ऑफ बॉक्स होता है तरीका. वो अपनी ऊंचाई ऊपर ले जाता है. बारिश उसके नीचे हो जाती है, वो बारिश से ऊपर हो जाता है, बट वो नीचे, वो कहीं पे शरण में नहीं जाता. तो डायरेक्ट पाथ में और जो सिस्टम्स हैं उसमें, लाइक द बुद्धिज्म, जैनिज्म and other schools of Hinduism also, there is a stress on doing so much work on your body, mind, intellect. But the Maharshi Raman says, you are not the body, you are not the mind, you are not the intellect. So whatever condition they are, why you are concerned about them? Why to work so much on that? You just come back to your own source. And this source, उस सोर्स के लिए क्या है कि जो आई विचार है, जो मूल विचार है, उस मूल विचार का जहां पे उत्पत्ति हो रहा है, जहां उदय हो रहा है, केवल उस उदय पे आप वहां अटेंशन में जाएंगे. धीमे धीमे आई विचार सिंक होना शुरू हो जाएगा. द मोमेंट इट सिंक्स और इट मर्जेस इनटू द सोर्स, माइंड हैज गॉन एंड यू आर दैट. सो प्रैक्टिस में इसमें टाइम लगता है. We have a small platform and we have a WhatsApp group, and there are ardent seekers, ardent participants. They have been continuously doing this self-inquiry practice 3 times a day. At 6:30 in the morning for 45 minutes, at 5 o'clock, and then 9 o'clock. We also share some of the messages and wisdom of Raman Maharshi. So Raman Maharshi told, it is a direct path, and
eternity, immortality, consciousness, awareness. That is your true nature. Only because of ignorance, because of some wrong identification, आपकी दृष्टि नहीं जा रही, आपकी दृष्टि हो गई है देह दृष्टि, देहात्मा दृष्टि, ज्ञान दृष्टि हो जाए आपकी। आप अभी सिनेमा पे के स्क्रीन पे मूवी देख रहे हो, सिनेमा के स्क्रीन को और आपका ध्यान नहीं गया। जब आप उसके अधिष्ठान को देखने लगेंगे तो फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड योर ट्रू नेचर एंड देन यू विल फाइंड even these outside appearances and disappearances, they are not apart from that, from where they are arising. So उसको कहा, ब्रह्मन भी उसको नाम दिया, उस अवेयरनेस को, उस कॉन्शियसनेस को। एंड जस्ट बिफोर आई कंक्लूड, महर्षि रमन ने कहा, दिस इज द ईजिएस्ट, दिस इज द डायरेक्ट पाथ सेल्फ इंक्वायरी एंड दिस इज ईजिएस्ट। एंड हाउ डज ही एक्सप्लेन इट इज ईजिएस्ट? कहता है जो काम करने में आपको अच्छा लगे, यू लव दैट, यू नो दैट एंड इट इज डूएबल। 3 चीजें उन्होंने कही। 3 चीजें यदि किसी कार्य में है कि वो आपको अच्छा लगे, उसको आप जानते हो और वो डूएबल हो, तो फिर वो ईजीएस्ट है। तो महर्षि रमन ने कहा ये तीनों चीजें सेल्फ नॉलेज में या अपने अंतर्मुखी होने में, अपनी नेचर को जानने में सही प्रतीत होती हैं। कहते हैं एवरीबडी लव्स हिमसेल्फ, हर एक आदमी को अपने से प्यार होता है, सेल्फ से प्यार होता है। सो इसका मतलब यू विल लव टू बी योर सोर्स, यू विल लव टू रियलाइज योर सोर्स। दूसरा है यू नो दैट, कहते हैं कि आई विल नो एनीथिंग आउटसाइड ओनली व्हेन आई नो माई सेल्फ, आई एग्जिस्ट, दैट इज द फंडामेंटल ट्रूथ। सत का मतलब होता है जस्ट यू स्टॉप हियर ओनली, जस्ट यू स्टॉप हियर ओनली। सो दैट सत हो गया। और इन एवरी डीप स्लीप स्टेज you go into that blissful state. So it is loving, it is knowing, it is easily knowable to everyone, and it is doable. So now I think the time has really is passing, so let us open for question answers. So thank you so much. It was indeed an eye opener and something which really has affected all of us, something which has shaken us. We generally say, we are so busy speaking about our names, our designations. The very start that you did, sir, that I am being known by my designation, I'm being known by the name, I'm being known by the place where I stay, I'm being known by my parents, but by family. But do we really think about as to what is our true identity? We really, that really took us to a different, different journey, a different direction. The way you started your talk today, as so this is not our true identity. Something that you also mentioned, that we get entangled in the external world, and we really want someone to tell us that, hey, look, that you're really getting too much immersed in the external world. And very beautifully you said that can you go turn inward, the words that you use, can you turn your mind inward, merge with the source? And we really are not aware that that's the source from where we come from. Our entire journey revolves around the word I, and so many times that we consciously unconsciously use the word I. And you use the statement, the pointer that you gave us, I shines in the heart, which is the source, and from that very source we emanate. The way you spoke about self-inquiry, you also mentioned about the intuitive powers which comes when you really turn inward. We really look forward for the answers from the external sources, people. But I think this inward journey really helps us to know what is the true path for us. You also mentioned a lot of spiritual readings, which definitely would have benefited all the audience who have joined us from various social media platforms, be it YouTube, Facebook, and Twitter.
Sir, and yes, there are a lot of questions which have come from the audience, which I would like to take. But before that, would really like to say that Shanti Kunj, which is the headquarters of All World Gayatri Parivar, has a temple called Gayatri Mandir Temple, and there we have something that is called as Bhatka Hua Devta. And this is where we all the spiritual seekers go, and they ponder upon ayamatma brahma sachida nandoham shivoham soham. So this is where we go, and it's an introspection that we do in front of these mirrors, and perhaps this is the only temple in the world which helps one to realize what they are. This is the ultimate realization. Also, would like to share with you, sir, that Pandit Sriram Sharma Acharya ji, the founder of All World Gayatri Parivar, did meet Maharshi Aurobindo and Maharshi Raman in the year 1934. And out of the 3,200 books that Pandit Sriram Sharma Acharya ji has written, the first book, in fact, he started his writings with this great masterpiece about which I mentioned, Main Kya Hoon, which has really opened the doors of self-inquiry for a lot of spiritual speakers across the globe. Also to mention, Gayatri Sadhana is also one of the processes which helps one in this journey of self-inquiry and the realization of who we all are. With this, I think with your with your permission, I would like to share the questions with you one after another. I would share the questions with you right away. The first question which is coming is from Ranjan Mumbai. If we are all divine, what makes us forget that we are divine, sir? And what is the reason behind that ignorance? So if you could help us know that. ऐसा है कि this entire creation is a leela, is a fun, it is a drama, and for that the God has created this. The God has created this leela, and for that ego is born within us, and that instrument, that is a junction point, that will, with the help of that, we can just be part of that leela. But at the same time, we should not forget our own true nature, which at times is happening. Thank you, sir. So the next question is coming from Usha G from Varanasi. What is the difference between the role and character identity? Role and character identity, you can say that the character identity is still more specific, and role may be little broader if we go through a kind of from spiritual perspective. Otherwise, I don't think that the question is in the right perspective as such. Nothing much is coming out of the question. Okay. I think she wanted to say the role and the nature. I think instead of character, it is the nature we were talking about, the real Swaroop. So real Swaroop is the source, our essence. Your real essence is your existence, consciousness, bliss, Satchitanand. That is your nature. That is permanent, eternal. And role is a name and form. I come out, I play part in this drama, but I should not be too much entangled into this. So very much connected to what you spoke about entanglement. There's a question coming in from Deepa ji from Bangalore, wherein she has asked, how can I make this awareness very strong, and how am I able to blend in the day-to-day life, keeping this awareness in place? This comes by putting many software into our mind. Firstly, everybody should do this self-inquiry practice. Like, we must turn our attention to I within us. If once you turn your attention on I, automatically it will mean your awareness has expanded, number one. Number two, you must stay sometime in a witness consciousness also. You should feel
that you are only playing a part in this drama. It is all transitory. Nothing is going to stay permanently. And then there should be no judgment. There should be no resistance in your mind. And you should accept the things as freely flowing. Because transitory nature of things, sometimes it will come as per your choice, sometimes it will not come. It will pass. These are the only suggestions one can say. So, But but do I, very practice. so I think all the 3 points that you've spoken, I wish we all could implement that so well. I think all the challenges would come to an end if we follow all the 3 things that you've just said. Yes. A very question which is coming from there is, what is the difference between matter and consciousness, and what are the different stages of consciousness? The consciousness, some masters, some sages have made some differences. They have said consciousness is static, that they called awareness. And there is a dynamism in consciousness, then the creation takes place. So, this word of names and forms, like the ocean is just silent, there is no wave, then it is a kind of peaceful or absolute consciousness or awareness. And when there is a waves in the ocean or turbulence, that is the dynamism in the consciousness. So entire creation takes place because of the dynamic consciousness. There is a movement in the consciousness. So you can make into only 2 categories. One is the consciousness in an absolute sense, unmanifest. Another is a manifest consciousness when there is a movement in consciousness. And the matter ultimately everything is conscious, everything is consciousness, but the matter is taken as insentient. The matter has no intrinsic awareness as such. This is the way it has been distinguished in the Advaita Vedanta teachings, sentient and insentient. So they say like body is insentient. Body doesn't have any awareness. Awareness comes through a junction box, which is the mind, the I. That is called Chitjar Granthi. There is a consciousness, that is Atman, self. And there is a body. Body is insentient, and that is a sentient. And between two, there is this I, which we are talking I. This is the mind, Chitjar Granthi. Because of that junction, we consider body as sentient. Sir, a question from there is coming, which is from Ved Prakash Bareli, from Mr. Ved Prakash ji from Bareli. What is collective consciousness? This term of collective consciousness has been given by the recent spiritual masters. They say that the consciousness, there is a consciousness uncontaminated. There is a consciousness uncontaminated, but then there are investments registered in that consciousness. So any kind of thought, any kind of activity, if it is repeatedly registered, like there is a plain paper and then there is a color, so similar color by so many people, so you will find that particular part of that paper will show a lot of intensity of that color. So if I feel the same way, you think the same way, the other person think the same way. So in that awareness, in that consciousness, that is a kind of आवरण. उस पे आवृत हो जाता है वो. And then it has an impact in the manifestation. So you have worked and you have headed a lot of organizations. यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है कि जिस पॉइंट को आपने रखा कि बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं और वो एक प्रकार से सोच रखते हैं, तो वो अच्छी हो सकती है, वो बुरी हो सकती है, तो उसी प्रकार का आवरण उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा. जी, वेरी ट्रू. आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है. द ह्यूमन माइंड इज सो डिफरेंट, इवन इट इज नॉट पॉसिबल इन ए फैमिली. व्हाट टू से ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, whatever discipline you bring, every person, his evolution is different. So you will find
outwardly you will find that everybody is, following that discipline. True. But inwardly it will not happen. It will So not happen. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग एक जैसा सोचे, एक जैसे और उस ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को रीच करता है? सोच एक सी नहीं होगी, उनकी एक्टिविटीज डर के कारण एक सी हो सकती हैं. Like the Nazi Germany, True. everybody was afraid of Hitler. So True. even internally they didn't feel, but they will execute the people. Right. Sir, a question is coming from Rita Ji from Delhi. What is the difference between Jeev, Atma and Paramatma? Jeev Atma is a kind of there is a karma theory which I have not discussed. So because of the karma theory, Jeev Atma is individual soul. And Paramatma is the elevated soul, the realized soul becomes the Paramatma. तो जीवात्मा में क्या है कि इंडिविजुअलिटी इज देयर, योर संचित कर्मा, योर प्रारब्ध कर्मा, दे आर देयर. एंड जब तक आपका कर्मों का आवरण आप पे रहता है, तब तक you have to continue your separate existence as per the karma theory. In the Raman Maharshi teachings, he says you become a non-doer. You just leave away the karma theory. I am not the doer. The moment you have stopped following that particular rule, no more the karma affects you. Only whatever was the accumulated karmas, only that will bear fruit for you. तो जीवात्मा वो है इंडिविजुअल सोल, जिसका कि अभी तक का प्रारब्ध चल रहा है, डेबिट क्रेडिट के कर्मा है, उन सब का भोग करके या उन सबको बर्न करके तब वो फ्री होगी, इंडिविजुअल सोल. सर, एक और प्रश्न आ रहा है शशि जी से, चेन्नई से. हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस? That is only by making your mind one pointed, that is through meditation or through self inquiry. Distractions means that my mind becomes distracted to this thing, that thing, that thing. That is a common problem of the modern man. We are always distracted. So we have to concentrate. Concentration will be possible, or one pointed attention will be possible only through meditation. थैंक यू सर. एक अंतिम प्रश्न आ रहा है नीना जी से, जमशेदपुर से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेतन, चेतना एंड चैतन्य? Chetna and Chaitanya, I think they are interchangeable also, because Chetna is the another name of consciousness. Or Chaitanya में sometimes people use it in a limited sense of Jivatma also, soul also, individual soul also. आप चैतन्य हो, that is all. सर, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं. उसके साथ जिस प्रकार आपने अपनी ये सारे प्रश्नों का जवाब दिया, हम हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि कैन यू शेयर सम ऑफ योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में हुए हैं और किस प्रकार ये सारी चीजें आपने हमारे बीच रखी. हाउ हैज दिस नॉलेज or how has this awareness has helped you manage all that? Who am I? What has been your journey of this who am I? How have you managed all of this, sir? I have been into seeking since my childhood, and since I was brought up in a Jain tradition. So earlier I was very deep into the Jain tradition. As I grew up, I started meeting the sages and saints of all streams. And I found that there is no division, and division is totally opposite to spirituality. Spirituality means integration, because the reality is one. And in that process of meeting many seekers and many sages, and I was posted in Dehradun and entire Uttarakhand, there were so many sages and self-realized masters, even in Rishikesh, Hardwar, Ane. So I was blessed by them. And then I found one thing is their humility and fearlessness. These are two good qualities. And I also was reading a very good literature from the masters की वाणी. जैसे two books which I used to keep when I was in the office was the Gospel of Ramakrishna.
and you go through the Gospel of Ramakrishna, it will empower you so much. I have read so many books of Acharya Ramchandji also. So once you read their life history and you see even such difficult times, they were not disturbed. So then you feel what are these problems, Always it's a matter of comparison. What kind of people you are emulating. जब आप जो है ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ेंगे, ऐसे लोगों का शिक्षा को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा आपकी लाइफ में तो कोई कमी ही नहीं है. What is there to worry about? Fearlessness, humility, that will come. सर आपने हमें कुछ ऐसे यू हैव गिवन अस पर्ल्स ऑफ विजडम जो आपने कहा, वन इज ह्यूमिलिटी एंड फियरलेसनेस. जब इस ज्ञान सभा जो हमारा 100th एपिसोड है ज्ञान सभा, और आपको बताना चाहूंगी कि दिया मुंबई जो अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई है, भारत नॉट जस्ट इंडिया बट यूथ्स अक्रॉस द ग्लोब, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू द लार्जर गोल. तो हम बहुत सारे युवाओं के साथ काम करते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं. तो आपकी जो जर्नी रही है पर्सनल प्रोफेशनल, आपका क्या मैसेज होगा इन यूथ्स के लिए when we close or conclude with today's Gyan Sabha, some pearls of wisdom for the youth of India? I think one should always be on righteous path. One should always follow a virtuous life. Virtue is knowledge. And one should never compromise the values, because it will give you a fearlessness. And get guided by the teachings of sages, the great people, not the people who have made success in life. Anybody can make success in life. The people who have lived virtuous life, you must get guided by their teachings. They will be giving you so much of strength of character. Sir, I think the journey for all of us who have joined us for the 100th episode of Gyan Sabha today, Who Am I? The journey has beautifully begun. Sir, I must share the feedback also with you, sir. Shilu Sagar ji has shared with us that it was a wonderful topic, explained amazingly by you, sir. Nirmala Dengra ji, who has explained wonderfully, wonderful session, beautifully explained. Koti naman to you. And I think pranams from each one of us from Diya Mumbai to you, and from all the august audience who've joined us from various social media platforms, Facebook, YouTube, and various social media channels. So thank you so much for accepting our invite at Diya Mumbai, the youth movement of All World Gayatri Parivar. It's a humble request to you to visit our headquarters, Shanti Kunj, Haridwar, which is the headquarters of All World Gayatri Parivar. Yes. When we are celebrating the Golden Jubilee, we are having the Golden Jubilee celebration. We'll be happy to have you amongst us. And yes, on behalf of our head, Revered Dr. Pranav Pandya ji and Srimati Shailbala Pandya ji, the head of All World Gayatri Parivar, we would be happy to have you at home. So with this request, we conclude today's Gyan Sabha. Before that, let me share with the august audience the next Gyan Sabha. We are coming up with a very interesting topic, and the topic for the next Gyan Sabha, we are having Dr. Sunil Sinon ji, and something that we all need in current times, and that's resilience. So the title for next Gyan Sabha is Resilience in Current Times, which would be put across by Dr. Sunil Sinon ji. We look forward for this august audience to be with us for the next Gyan Sabha, and we all work together towards man making and character building, which is the motto of All World Gayatri Parivar. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमें आज आपने इस, I think it's a really great title with this great divine human being like Jain sir. Thank you so much for blessing us, and we need your blessings for this journey of Who Am I, sir. We conclude today's Gyan Sabha with Shanti Part. Om Dhyo Shanti Antariksha Gum Shanti Hi Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagum Shanti
शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ठासु शान्तिर्भवतु। Thank you.